Hello everyone. Am I audible to everyone? हाँ जी, एक बार जल्दी से कंफर्म कीजिए आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? वीकली करंट अफेयर रिवीजन में आपका स्वागत है. Today we will be discussing about most important topics which were in news recently. देखो पहला टॉपिक जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं that is about consider the following statement for voice over new radio. It is also known as voice over 5G. Voice over new radio is the IMS based voice calling services that uses 5G network for its source of IP यानी internet protocol voice processing. It uses advanced radio codecs that provide superior clarity and fidelity based on 5G's increased data capacity. How many of the above statements is or are इनकरेक्ट? आपसे पूछा गया है कि इनमें से कितनी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट वॉइस ओवर न्यू रेडियो, ये जो है ये आपकी 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड एक आपकी कॉलिंग सिस्टम है. अब जैसे आपने शायद वोल्ट के बारे में सुना हो, जब 4G नेटवर्क आया था तब वोल्ट आपका न्यूज में था. तो ये वोल्ट का अपग्रेडेड वर्जन है वॉइस ओवर न्यू रेडियो. उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट आपको गिवन है. एक बार इसको चेक करके देखिए कि आप क्या इस क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं. एक बार ट्राई कीजिए. गुड मॉर्निंग सचिन, मॉर्निंग आकाश. हाँ जी, ओके, आकाश ने वैसे तो आंसर दे दिया है, बाकी भी आप अपना आंसर ट्राई करके देख सकते हैं. काव्या का भी आंसर आ चुका है. देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट 5G नेटवर्क्स, इसके अंदर ना लेटेंसी रेट कम है. लेटेंसी रेट क्या होता है, एक बार एक दिमाग में क्वेश्चन आ जाए तो, जैसे मान लो डाटा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक भेजना है, तो इसमें जो डिले है वो डिले बहुत मिनिमम है. तो यहां पर 5G नेटवर्क के ही आईपी को यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल को यूज करके यहां पर ये वॉइस सर्विस कॉलिंग सर्विस दी जाती है, जिसे अक्सर वॉइस ओवर 5G भी कहा जाता है, जो कि वोल्ट का एक अपग्रेडेड वर्जन है. अब यहां पर जो कि डाटा के अंदर लैग कम है, एक सोर्स से दूसरे डेस्टिनेशन तक डाटा पहुंचने में समय बहुत कम लग रहा है. दैट इज व्हाई इट हैज द एडवांस ऑडियो कोडेक्स, व्हिच मींस द डाटा कैपेसिटी इज हायर एंड एज वेल एज द साउंड क्लैरिटी विल बी मच बेटर एंड इवन द डाटा स्पीड विल बी हायर. सो हेंस देयर इज नन ऑफ द स्टेटमेंट दैट इज इनकरेक्ट. मींस सभी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, तो इस वजह से द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज नन ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. करेक्ट आंसर आपको बता दिया गया है. नाउ नैनोफ्लूइडिक वाज रिसेंटली इन न्यूज. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट. फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स कन्फाइंड विद इन अल्ट्रा लार्ज स्पेस एट nanometer scale. It has a wide range of application in energy conservation, water desalination, biotechnology, medicine. Which of the above statement is or are correct? One only, two only, both one and two, neither one nor two. Voice breaking. Okay, one of you have answered this question. I hope now my voice is audible to everyone. Don't go with this. यहां पर ये थोड़ा मिसनॉम भी हो सकता. Let me tell you how. देखिए, when we talk about nanofluidic, basically it is a study of liquids at a nanoscale, and here
the spaces between the molecules is very small. Like here it is said that ultra large spaces, नहीं ultra large नहीं, ultra small spaces we are talking about कि यहाँ पर we are dealing with the liquids at a very you can say small size, because the at nanoscale the difference between the particles will be very small, so hence the spaces will be very small, and it shows some kind of properties like it has a higher storage of charge, and even if we talk about volume to surface ratio is quite high in this kind of material. When we say कि we have derived something कि liquid को 2D में convert कर दिया, like 3D में होते हैं ना आपके material, like right now I am in a 3D three-dimensional structure, but imagine if I'm turned into a 2D object, like right now you are watching me on YouTube, so I am right now in a two-dimensional object for you. So similarly we converted the liquids into two-dimensional objects, and after that we started studying them, and when we started studying them it is called nanofluidic material, because at nanoscale means it is a scale that is 10 की power -9 nanoscales में आते हैं. So when we talk about की meter, when we talk about कि इतने small size में particle behave differently, मतलब यहाँ पर जो particles हैं वो behave करते हैं totally different. Am I audible now? Please let me know. Am I audible right now? Okay, what I was saying that we started studying liquids at a nanoscale. Nanoscale means 10 की power -9 मीटर के स्केल पे हम इसको टू dimensional object में convert करते हैं, and then we start studying. Generally, the liquid or materials behave differently when we talk about at a nanoscale. So hence, what we find out कि भाई यहाँ पर the storage capacity of these liquids is quite high. Even surface to volume ratio is also quite high. Means it has a high density somehow. So by this, it can be said that it can be used in energy conservation because storage में use हो सकता है. Then water desalination means surface to volume ratio high है, उससे water desalinate करना, जो जैसे for example salty water है उसको fresh water में convert करना, उसमें use हो सकता है. Medicines की delivery में use हो सकता है, and even बायोटेक्नोलॉजी में भी इसका यूजेस देखने को मिलता है. तो यहां पर इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन बी. सर साउंड, यस सर, एक हो रही. ओके, साउंड ब्रेक हो. तो यार मैंने सुबह भी टीम को मैसेज तो डाला था, बट थिंग इज टीम शायद आज छुट्टी पे है, जिसकी वजह से शायद टीम जवाब नहीं दे रही है. स्टिल फेसिंग सेम प्रॉब्लम, अभी भी वो सेम प्रॉब्लम हो रही है, आवाज ब्रेक कर रही है. प्लीज एक बार मेरे को कंफर्म कीजिए. लेट्स सी, अगर प्रॉब्लम परसिस्ट करती है तो विल सी क्या कर सकते हैं. तो करेक्ट आंसर एज आई टोल्ड यू इज ऑप्शन बी. नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन लीड IT 2.0 launched by India and Sweden during COP28 World Climate Summit. The primary aim of Lead 2.0, Lead IT 2.0 is transition of heavy emitting industries to sustainable practices through technology transfer. Okay, now if we talk about this particular question, you might be aware about जब भी आपकी any new
यूनेफ ट्रिपल सी की मीटिंग होती है एंड एनी गुड इनिशिएटिव इज टेकन आउट ऑफ दैट मीटिंग, तो यहां पर उसके बारे में यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो लीडरशिप फॉर इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन 2.0 क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार इसको देखिए कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। द ऑप्शन गोज लाइक वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, एंड आइदर वन नॉट टू। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3. This is the question number 3 for us. Try to attempt this question. Now, if you try to attempt this question, it will be fairly very easy for you. Like if you might be following this UNFCCC COP28, which is going on in Dubai. So recently with Sweden government, Indian government started this leadership group of industrial transition. In this, there are almost 18 countries participating in this, plus 20 different industrial leaders are participating in this. So hence, the first statement is quite correct कि भाई COP28 में जो आपकी क्लाइमेट समिट चल रही है, in this particular summit हमने ये चीज स्टार्ट की, इनिशिएट की है, ये बात सही है। When we talk about इसमें क्या क्या जाएगा, इसमें डेवलपिंग कंट्रीज में जो वेरियस इंडस्ट्रीज है, स्पेशली द हैवी emitter इंडस्ट्रीज लाइक स्टील, एल्यूमिनियम, आयरन, ये जो heavy emitter industries है, we are focusing on them so that we can reduce the emission level of these industries and hence able to achieve what we have committed in Paris Agreement. It never says that zero emission, but it says we'll try to reduce the emission level. Yes, heavy industries is at the focus, यहाँ पर उनके ऊपर फोकस है एंड हम उसमें कहीं ना कहीं emission level को कम करना चाहते हैं through technology transfer and funding. So yes, the second statement is also correct. Therefore, the answer will be option C. The answer will be option C. Am I clear to everyone? Now, try to attempt this question. One of the painting given in this particular question was in news. So that's why this question is there. Consider the following pair. Madhubani painting belongs to Bihar. Charitra painting belongs to Odisha. Worli painting belongs to Maharashtra. Tanjore painting belongs to Tamil Nadu. How many of the above pairs are correctly matched? One only one, only two, only three, all of the above. This is a quite interesting question because sometimes when you see ancient history, art and culture, such kind of question can be asked. Whenever there is a painting in news, whenever there is a festival in news, try to read about those festivals because such kind of questions, there might be a chance you might have read about one or two, but several option might not be like आप उसके बारे में नहीं पढ़ा होगा तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती। So try to attempt this question. सचिन ने अपना जवाब दे दिया है, that is option D. Everyone else? हाँ जी, try to attempt this question. Okay, let me give you an idea. Madhubani painting basically belongs to Bihar area. You can say कि ये जो बिहार का मैथिली एरिया है, बिहार नेपाल बॉर्डर वाला जो एरिया है, that area it belongs to. Basically इसमें डिपिक्ट किए जाते हैं कुछ हिस्टोरिकल सीन्स, mythological characters, और you can say कि जो दंत कथाएं होती हैं उनको डिपिक्ट किया जाता है यहाँ पे. When we talk about पथ चरित्र, basically ये बिलोंग करता है उड़ीसा को. इसमें जैसे स्क्रोल नहीं होता, जैसे पहले राजा महाराजाओं के ऑर्डर पढ़ने के लिए वो स्क्रोल होता था, तो उसके ऊपर इसे पेंट किया जाता है, कपड़े के ऊपर वाइब्रेंट कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है. यस, इट बिलोंग्स टू उड़ीसा, स्पेशली द एरिया नियर पुरी. पुरी जो आप टेंपल है ना, पुरी टेंपल, जगन्नाथपुरी, इन दैट एरिया इट बिलोंग्स टू. वर्ली पेंटिंग इट इज लाइक कि महाराष्ट्र का ही है. इसमें लाइक ज्योमेट्रिकल फिगर्स लाइक सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर्स, इनका इस्तेमाल किया जाता है. एंड बीच में सीन्स लाइक हंटिंग के, लाइक डांस के, या किसी फेस्टिवल सेलिब्रेशन के, उस तरह की चीजों को इसमें इस्तेमाल किया जाता है. तंजौर तो यू माइट बी लाइक एबल टू फिगर इट आउट कि तमिलनाडु के आसपास का एरिया, तो तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर.
ये सदर्न पार्ट में आपको इंडिया के देखने को मिलते हैं तंजौर पेंटिंग। सो यस, ऑल द 4 ऑप्शंस आर करेक्ट। यस, जैसे बाहुबली में उपड़ा होता है, तो वो सेम चीज यहाँ पर पथ चरित्र आपको इसमें देखने को मिलता है। बेसिकली ये भी लाइक जो लोकल दंत कथाएं होती हैं, लाइक लोकल हीरोज एंड ऑल, उनकी पेंटिंग होती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि 1 2 3 4 चारों ही ठीक है, तो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। एंड स्पेशली मेक दिस थिंग क्लियर टू यू, I just want to make this thing clear to you. Do read about all the paintings. Because especially इस पार्ट से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई रहती है। Now, Scarborough Shola recently seen in news. It is a disputed island between which country? You might be aware about this thing कि अभी recently एक कंट्री ने अपनी लाइक डिप्लॉयमेंट इन स्कॉब्रो आइलैंड इंक्रीज की है, बिकॉज ऑफ विच जो जिस कंट्री के साथ इसका डिस्प्यूट है उसने भी कुछ अपने मिलिट्री लेवल यहाँ पर एक्सक्लेट किए हैं। तो यहाँ पर इस वजह से ये थोड़ा न्यूज में था आर्टिकल। ये एरिया आपको पता होना चाहिए, साउथ चाइना सी में 2-3 एरिया जैसे ऐसे रहते, जैसे पार्शल आइलैंड्स हो गए, स्कॉब्रो आइलैंड्स हो गए, ये आपके फ्रीक्वेंटली न्यूज में रहते हैं, डिस्प्यूटेड एरियाज हैं। तो यहां आपको बताना है किन 2 कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूटेड एरिया है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। Try to figure out this thing. Right now I'm saying South China Sea, so that means there should be a name called China in this. So we have only 2 options, whether it's gonna be China and Japan. Senkaku Island was disputed between this China and Japan, so that is not the case. When we talk about Scarborough Island, it is a disputed area between China, Vietnam and Philippines. 9-degree channel जो होता है, 9 dash line, sorry, that is where these islands are located. तो काफी करीब है ये आपके फिलिपीन वाले एरिया के। That's why ये थोड़ा आपको याद रखना है के बारे में। There is a like potential इस क्वेश्चन को आपको यूपीएससी में पूछा जाए, खासकर साउथ चाइना सी में आपके पार्शल आइलैंड्स की लोकेशन, लाइक ये स्कार्बरो आइलैंड की लोकेशन, इनको जरूर से देख लेना, बिकॉज डिस्प्यूटेड एरिया है तो इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। Now, let us try to address this question. Consider the following statement about graded response action plan. It is set of emergency action implemented in 3 stages depending upon severity of air pollution. Supreme Court of India in MC Mehta versus Union of India 2016 judgment approved this implementation of GRAP. Commission for Air Quality Management implements the GRAP. How many of the above statements are correct? Only 1, only 2, all of the 3, none. Yes, right. आयुष बिल्कुल सही कहा। अगर यहां पर जापान होता, it should be East China Sea, not the South China Sea. South China Sea में you have कंट्रीज लाइक वियतनाम है, वहां पे नीचे मलेशिया है, आपका साइड में आपका लाइक ताइवान पड़ जाता है थोड़ा, एंड थोड़ा आपका फिलिपीन पड़ जाता है। वो लुजान स्ट्रीट वाला जो पूरा एरिया है वो आपका आ जाता है इसमें। ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। GRAP, हाँ जी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंटली इट वाज इन न्यूज बिकॉज ऑफ दिल्ली पोल्यूशन। एनसीआर में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स देखने को मिला था, तो उसकी वजह से आपका ये न्यूज में था। यू माइट बी अवेयर अबाउट सफर, हमने एक चीज स्टार्ट की थी जिसमें एयर क्वालिटी को हम मॉनिटर करते हैं लाइक डेली बेसिस पे। यू कैन से कि ये आपका रियल टाइम बेसिस पे आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज में आपकी एयर क्वालिटी को रखा गया है। दैट इज लाइक कि 0 to 100 के बीच में कुछ आपकी एयर क्वालिटी रहती है, 0 to 50 के बीच में कुछ रहती है। तो लाइक ऐसा कुछ डिवीजन किया गया। तो इफ वी टॉक अबाउट, यहां पर आंसर दिया है सी ऑप्शन। बट द थिंग इज, ट्राई टू अंडरस्टैंड, देयर इज नॉट
3 stages. It has 4 stages: poor, very poor, severe, yeah, critical you can say, and very critical. These are the 4 categories of division, and with each category there is there is a large scale restriction on the activities. For example, when we talk about stage 1, जो भी आपका waste होगा, you cannot burn that waste, आप उसको जला नहीं सकते. फिर when we talk about stage 2, तो आपके जो कोल फायरिंग वगैरह होती है, जैसे फायरवुड की बर्निंग होती है, जैसे ढाबों पे रोटी बनाने के लिए तंदूर वगैरह में, तो उस चीज के ऊपर जैसे बैन लग जाता है. व्हेन इट कम्स टू स्टेज 3, तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के ऊपर बैन लग जाता है. एंड स्टेज 4 में जो दिल्ली एनसीआर एरिया में जैसे बहुत से ट्रक्स वगैरह आ रहे होते हैं, तो देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट पार्ट ऑल्सो. यहाँ पर आपको समझना होगा कि हर स्टेज के साथ रिस्ट्रिक्शन बढ़ती जाती है. एंड जैसे BS3 इंजन पेट्रोल के, BS4 इंजन आपके डीजल के, इनके ऊपर बैन लगा दिया जाता है. ये भी आपको स्टेज 4 में देखने को मिलता है. व्हेन वी हैव हाईएस्ट सिवियरिटी इन दी एयर पोल्यूशन, मतलब 500 के टॉप गया आपका AAIQ, एयर क्वालिटी इंडेक्स. So it is based upon the air quality index. We plan this into 4 stages, not 3, it's 4 stages. So this question, this part is incorrect. Yes, it was MC Mehta versus Union of India, in which this graded action plan was designed. Then after that, recently एक statutory body constitute की गई, that is Commission for Air Quality Management, which guides the Delhi government, Central Pollution Control Board, State Pollution Control Board, and various other governments in the NCR areas, so that steps can be taken to restrict the air pollution. मतलब यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है ना, ये एनसीआर एरिया में, जैसे आपकी हरियाणा की गवर्नमेंट पड़ती है, राजस्थान की पड़ रही है मान लो, या आपकी उत्तर प्रदेश की पड़ रही है, और दिल्ली की गवर्नमेंट पड़ रही है, इनको सजेस्ट करते हैं कि क्या मेजर लेने हैं. प्लस CPCB, दैट इज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसको गाइड करते हैं कि क्या एक्शन इन्होंने लेने. तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर कि भाई सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, फर्स्ट इनकरेक्ट है, तो 2 ही स्टेटमेंट ठीक है, तो आंसर बनेगा ओनली 2, दैट इज ऑप्शन बी. दैट इज ऑप्शन बी. नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Global bond index, emerging market recently in news, track the performance of which kind of bonds? Foreign currency dominated sovereign bonds, local currency dominated sovereign bonds, foreign currency dominated corporate bonds, local currency dominated corporate bonds. Try to answer this question. Now you might be aware about this thing कि JP Morgan ने, it's a private organization, recently इंडियन गवर्नमेंट के सॉवरेन बॉन्ड को इंक्लूड किया है अपनी ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट में. इट वाज डन बाय योर JP Morgan. इट इंक्लूड्स सॉवरेन बॉन्ड्स. सॉवरेन बॉन्ड्स के अपने पास 2 ऑप्शन है. It is denominated in local currency. That's why government of India is very keen about this. मतलब इसके बारे में हम ज्यादा कुछ इसलिए because it is in the local currency. Now we do not have to worry about those things कि we have to, like earlier it used to be like if we issue them in the foreign currency, the main problem is initially we have to convert dollar into rupee, then invest it into the bond market, and then we have to convert rupee back to dollar and pay it out. So for instance, when they have purchased these kind of bonds, the value of that bond was like 79 rupees. The dollar was 79 rupees. Now, while returning the money, the value of that dollar was 80 rupees. So eventually, it will be harsh for the person who is जो ये bond market में डाल रहा है पैसा. तो जनरली इट विल बी जो जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है, जैसे फॉर एग्जांपल टाटा स्टील, सॉरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये सिक्योरिटी है,
तो यहां पर गवर्नमेंट को यहां पर बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि भाई डॉलर में पेमेंट कर रही है, डॉलर के रेट में कुछ भी चेंजेस आए तो इवेंचुअली गवर्नमेंट हैज टू बेयर द कॉस्ट। तो हेंस गवर्नमेंट वाज नॉट कीन कि भाई इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। बट रिसेंटली व्हाट वी हैव सीन इज कि इसमें लोकल करेंसी यानी इंडियन रुपी में इस बॉन्ड को फॉरेनर्स खरीदेंगे। तो अल्टीमेटली द कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग डॉलर इनटू रुपी विल बी borne बाय द इन्वेस्टर। तो वो उसकी प्रॉब्लम है, अपनी प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट इज वेरी हैप्पी भाई इसमें हमारा लाइक नाम आ गया। तो दैट मीन्स कि अप्रोक्सीमेटली दे आर सेइंग कि वी हैव अराउंड 236 बिलियन डॉलर लाइक बॉन्ड मार्केट के अंदर हमारी वैल्यू है। तो इसमें ऑलमोस्ट 10% शेयर विल बी इन लाइक इंडियन बॉन्ड मार्केट बाय द ईयर 2025। So that is a huge number and we will get a lot of investment in India. So that will be like it will push our infrastructure projects and various other projects which we are planning in the upcoming years. So that's why the answer is local currency denominated sovereign bond. Sovereign bond means only the government like state government, the central government or municipal corporations. These kind of organization can issue these kind of bonds. तो ये चीज यहां पर थी। Now let us come to the next question. I guess this is the question number 8. And the question goes like this. Which of the following statement with respect to the initiative Mahasagar is correct? It is India's Chief of Defense Staff's initiative for high-level virtual interaction between maritime head of Indian Ocean region. First edition of high-level virtual interaction Mahasagar was hosted in 2022. The theme of 2023 Mahasagar edition was collective maritime approach towards countering common challenges. It is an outreach initiative to ensure security and growth in the Indo-Pacific region. Try to answer this question. Although many of you are just like a silent watcher, I'll appreciate if you answer. You are answering incorrect. Okay. Sometimes when you do not know the context of the article, there is a chance you can have a negative answer. It's quite okay. Okay, let me tell you this thing. The first statement is incorrect because it is a initiative of Indian Navy. So naval staff के जो head हैं, basically he was the head of the meeting. तो महासागर का मतलब क्या है? महा का मतलब है maritime heads of, यहां पर सागर का मतलब क्या है? Security and growth for all in the region. मतलब we are talking about Indian Ocean region. We are not talking about Pacific here. So hence fourth statement is incorrect because Pacific भी इसमें जुड़ा हुआ है. Indian Ocean region के बारे में बात, not about the Pacific Ocean. So Mahasagar is all about Indian Ocean. Countries like Kenya, Madagascar, India, all this. These are the countries which are actively participating in this. And the theme for 2023 was collective maritime approach towards countering common challenges. जो कॉमन चैलेंजेस हैं उनको यहां पर फोकस किया जा रहा है. तो हेंस द थर्ड स्टेटमेंट वाज ट्रू एंड द फर्स्ट एडिशन वाज अ वर्चुअल मीटिंग दैट वाज हेल्ड इन 2023. yes, if we talk about the second statement itself becomes untrue because यहां पर 22 बात की है, it was 23. is it clear? Now try to answer this question. It is damn simple question. Which of the following are non-constitutional body? Niti Aayog, Central Bureau of Investigation, State Human Rights Commission, Central Information Commission, GST Council and Finance Commission. Your option goes like 1, 3, 4 and 6, 2, 3, 6, 2, 2, 4, 6, 1, 2, 3 and 4, 2, 5 and 6. Akash, don't worry about these things.
Yes, it happens. Thing is, all you have to do is 7:30 पे जो मेरी क्लास आती है, keep on watching that class and regularly watch करोगे, you might be able to answer most of the questions. And some of the questions you might feel like it's a bouncer, because some of the articles which I'm not been able to cover in my discussion, for example, from the live mint or any other source, that I'm accommodating in this one. So if we talk about Niti Aayog, it's not a statutory body, neither it's a constitutional body. When we talk about CBI, again, Delhi Police Establishment Act के अंदर बना था, so that is also not a constitutional body. State Human Right Commission Act के अंदर बना था, so like this is also not the case. Chief Information Commission RTI Act के अंडर बना था, तो ये भी यहाँ पर आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है. ये चार तो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ही नहीं. If we talk about Finance Commission given under Article 280, GST Council that is given under Article I guess 279. You can check it, but yes, GST Council is a part of constitutional body. So hence, fifth, sixth is should not be the part of the answer. So 6 is given here, 6 is given here, 6 is given here. So all the three options are eliminated. Hence, the answer will be 1, 2, 3, and 4. Option C. Question 9, the answer is option C. Now let's come to the question number 10. It's quite a simple question. We have talked about this organization. International Maritime Organization is a specialized agency of United Nations. It is the global standard setting authority for the safety, security, and environmental performance of international shipping. It was established as Intergovernmental Maritime Consultative Organization in 1968. How many of the statement is correct? Given above is or are correct? Only one, only two, all three, none. The answer is correct. Option B is correct. But tell me one thing, which of the statement is incorrect? Which of the following statement is incorrect? Okay, Simona, let me tell you one thing. If we talk about International Maritime Organization, it's a specialized agency of UN, I guess since 1956 around. Roughly around 1950s, you can say. It was an organization which was set up in 1948 as Intergovernmental Maritime Consultative Organization, not in 1968. Whereas in 1981, it changed its name to International Maritime Organization, which has special focus on how to set a standard of safety, security, and environmental performance in international shipping. Hence, first and second statement are correct. Third statement is incorrect. So the answer is option B. Next, the term Zod phantom, F is silent here. Zod phantom, sometimes seen in news, referred to an elusive maritime species spotted in Norway, Norway's pristine water. Android malware that eludes detection and steals sensitive users' information. An operation conducted by Egypt to supply humanitarian aid to Palestine. Glacier melt report. Glacier melt reported in
नॉर्वेगियन फॉर्जोर्ड्स, सॉरी जोड्स। इसमें से जोड फैंटम किस लिए न्यूज में था? क्या ये एक ग्लेशियर है जो अभी पिघला है, या इजिप्ट की एक ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करने की कोशिश थी फिलिस्तीन वाले पार्ट में? मालवेयर है जो कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चुराता है एंड्रॉइड फोन्स में, या एक ऐसी इल्यूसिव, या आप ये कह सकते हैं ऐसी स्पीशीज है जो मेन टाइम एरिया में हमने स्पॉट किया नॉर्वे की? क्वेश्चन नंबर 11, द करेक्ट आंसर इज तो नहीं। एनी अदर ऑप्शन यू कैन सजेस्ट मी? कंप्यूटर जी, दो गलत जवाब यहां पर मिटा दिए जाए। तो यहां पर मैं आपको कहता हूं कि फर्स्ट और फोर्थ मैंने मिटा दिया। नाउ ट्राई टू आंसर दिस। 50-50 हमने अप्लाई कर दिया है। कंप्यूटर जी ने दो गलत ऑप्शन आपके सामने से हटा दिए। ऑप्शन ए हट गया, ऑप्शन डी हट गया। चलिए जी, अब बताइए। यस, that is the correct answer. It's a kind of malware which recently was reported in Thailand, Indonesia, like South East Asia की कुछ countries हैं, वहां पर इसे report किया गया था. It basically hacks your SMS, WhatsApp, email and sensitive information from these, when we talk about these email and all. तो वहां से ये sensitive information चुराता है. तो yes, option B is the correct option. तो यहां पर आप सभी को मिलते हैं गिफ्ट हैम्पर्स, है ना? ऐसे ही चलता है ना? तो बहुत अच्छा खेले आप लोग। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड ऑफ कॉडेक्स अलिमेंट्रियस कमीशन, जो अभी रिसेंटली न्यूज में था बिकॉज इंडिया बिकेम मेंबर ऑफ दिस। इंडिया इसका मेंबर बना है, इस वजह से ये न्यूज में। CSE is an international food standards body established jointly by FAO and World Health Organization. Objective of CSE is to protect consumers' health and ensure fair practices in food trade. Which of the following, which of the above statement is or are correct? One only, two only, both one, two, neither one nor two. बाउंस कर रहे हैं, कोई ना कैच करेंगे। The thing is, aim of the session is to cover all the news articles if at all we left somewhere, and also to practice those questions जो आपने पहले ही ऑलरेडी पढ़े हैं। अरे ऑप्शन ओके, 3 all are correct, both are correct, वैसे तो not all, both are correct. Yes, Sachin, Akash and Sumona. अरे ऑप्शन नंबर 3, she what she mean to say is option 3. मैं समझ गया तो। Now if we talk about this, यहां पर आपको याद रखना कि इंडिया रिसेंटली इसका मेंबर बना था, तो वी सेड कि भाई जो मिलेट्स के लिए हम स्टैंडर्ड्स डेवलप कर पाएंगे। ऑलरेडी पोल मिलेट के जैसे आपके स्टैंडर्ड्स हैं, सिमिलर स्टैंडर्ड्स फॉर अदर मिलेट्स वी कैन प्रमोट as India becomes part of this organization. It is a joint initiative of FAO and World Health Organization started in 1961. And if we talk about the objective is to protect consumer. For example, यहाँ पर they developed standards कि भाई ठीक है, अगर आप कोई चीज import या export कर रहे हैं, you have to adhere to the certain standards. So these are developed by CAC, that is Codex Altemeris Commission. So hence the option third, yeah, C will be correct answer.
Now, we have discussed this thing. Try to answer this. Mount Merapi volcano recently erupted is located on which island? Java, Sumatra, Sulawesi, Komodo. सज्जनों, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में आपका स्वागत है। देखते हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन जल्दी से देता है। हाँ जी, जल्दी से। तुम सब एक जगह बैठ के तो नहीं आंसर कर रहे, मेरे को ऐसा लग रहा है। चलो, कुछ तो सही आंसर आ रहे हैं। दैट इज जावा में है, जावा में इट इज लोकेटेड। कुछ ऐसा कहा जा रहा है। इंडोनेशिया में है, जावा भी इंडोनेशिया में, सुमात्रा भी है। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? जल्दी से करेक्ट आंसर, वैसे तो मैंने मार्क कर ही दिया था, ए ऑप्शन जावा। It was like recently almost 23 people were missing. Out of those 23 people, 12 की डेड बॉडी मिल गई थी, अभी भी 11 मिसिंग है। तो जावा इसका करेक्ट आंसर। Okay, consider the following statement regarding global methane pledge. It was launched in COP26 of UNFCCC by European Union and United States. It aims to reduce global methane emission by at least 30% from 2020 levels by 2030. India has also joined this initiative. Which how many of the above statement is or are correct? Only one, only two, all of these, and none. एक मिनट, 12 ये था, क्वेश्चन नंबर 13 ये था, डन एंड डस्टेड, एंड क्वेश्चन नंबर 14। अब ठीक, क्वेश्चन नंबर 14, 14 का बी और सी। जो बी बोल रहे, लेट मी नो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देखो दो सही हैं, चलो मान लेते हैं, दो यहां पर स्टेटमेंट ठीक है, बट टेल मी इनमें से गलत कौन सी स्टेटमेंट है? करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। मैं इस चीज को एग्री करता हूं कि इट वाज लॉन्च्ड एज एन इनिशिएटिव बाय यूरोपियन यूनियन एंड यूनाइटेड स्टेट इन COP26, where they said ki we will not focus upon individual country, but yes, we will focus upon the overall reduction in the emission level of methane, in which we will try by 2030 we will reduce at least 30% of the methane emission from all the economies. तो यहाँ पर आपकी जो सेकेंड ऑप्शन है दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ऑलमोस्ट 155 कंट्रीज के मेंबर हैं, तजाकिस्तान और अंगोला जैसी कंट्रीज अभी रिसेंटली इसके मेंबर बने हैं, बट इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस। ट्राई टू थिंक वाइजली, ट्राई टू थिंक वाइजली। व्हाई आई एम सेइंग दिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इंडिया हैज अ ह्यूज लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन,
means we have largest livestock population across the globe. And when we talk about livestock, they generate methane. कि जो भी उनकी बर्ब्स आती है, जो भी डकार डुकुर आती है, उससे वो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं. एंड इफ वी टॉक अबाउट यहाँ पर जो आपका लाइक इंडिया है, इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस. राइस में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और वहां पर भी आपकी मीथेन प्रोड्यूस होती है. So that's why we do not want to become part of this. कि हम मीथेन का रिडक्शन नहीं कर सकते because प्राइमरी सेक्टर के ऊपर lot of population depends. So hence, India is not member to this. Answer is option 2. अगर आपने इस बारे में सोचा होता तो डेफिनेटली आप सोच लेते कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसी मुसीबत नहीं करेगी. अभी रिसेंटली वी हैव टॉक्ड अबाउट साइक्लोन मिचोंग which was appeared to be the southwest Bay of Bengal में, जो हिट कर रहा है आपका आंध्र प्रदेश तमिलनाडु वाले पार्ट को. has named after suggestion provided by. इनमें से मिचोंग जो नाम है, ये जो नाम है साइक्लोन मिचोंग, ये किसने दिया है? म्यांमार, चाइना, वियतनाम, पाकिस्तान. अभी भी वी आर नॉट मेंबर ऑफ दिस. So yes, the correct answer is Myanmar. बताइए आकाश, सचिन, मल्लू एंड आयुष, आप सभी के आंसर करेक्ट हैं. Try this question now. Which of the following statement is incorrect regarding bank loan write-off? Recently एक आरटीए के बारे में बात हुई थी राइट ऑफ्स की, तो वहां पर अभी देखते राइट ऑफ लोन्स असिस्ट बैंक in reducing their total non-performing assets. Write-off loans are removed from bank's book of unrecovered debt. Declaring a loan as write-off means removing it from the list of assets. Bank writes off a loan when borrower defaults with a little chance of recovery. This is the question number 15th. Now 16th. 16वें का आंसर क्या है? If we talk about write-offs क्या होता है? मान लो if I am giving loan to someone, एग्जाम्पल देता हूं. Let me tell you, like consider this as me, Vivek. I have given 1 crore rupee loan to Sumit. Now, if there is a possibility that Sumit is unable to repay this loan, it will move to write-off so that my NPA, non-performing assets, should decline. Means यहाँ पर जब chances है that the person will not be able to return the money, then it is said to be उसे write off कर देते, वो NPA आपको घटा देगा. But it doesn't means कि आप उसको अपनी बुक्स में से हटाएंगे. Means यहाँ पर आपको रिमूव नहीं करना है. Yes, वो आपकी बुक्स में रहेगा but as a unrecovered debt. तो एसेट की फॉर्म में रहेगा, अनरिकवर्ड डेट की फॉर्म में. आंसर यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है कि यहाँ पर आपका लाइक जो राइट ऑफ से है, इसमें क्या है, आप बैंक की बुक्स में से उसे रिमूव नहीं करते, ये एज अ अनरिकवर्ड डेट उस बैंक की बुक में रहेगा. आंसर इज बी ऑप्शन. ऑपरेशन गंगोत्री, रिसेंटली इन न्यूज, ग्लेशियर मैपिंग ऑफ हिमालयाज, India's maiden expedition in Antarctica, exploration of resources in Arctic region, enhancing security in Sino-India border.
ओके, करते हैं ट्राई। नो, इसका आंसर 16 का तो बी था, नो 17। चलो आपको ऑप्शन देता हूं, ए ऑप्शन एलिमिनेट कर दो और ऑप्शन डी एलिमिनेट कर दो। अब बताओ करेक्ट ऑप्शन क्या है। आपको एक हिंट देता हूं, आपने नाम सुना कभी? कभी नाम सुना दक्षिण गंगोत्री? दक्षिण गंगोत्री इज बेसिकली इंडियाज रिसर्च सेंटर इन द एरिया ऑफ अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में हमारे एक रिसर्च सेंटर का नाम है, रिसर्च स्टेशन का नाम है। तो बेसिकली व्हेन वी स्टार्टेड विद द एक्सपीडिशन ऑफ अंटार्कटिका, इट गोज बैक टू 1980s, 1981 की बात है। हमने एक्सपीडिशन स्टार्ट की थी, तो उस समय इसको नाम दिया गया था ऑपरेशन गंगोत्री। उस समय उसको नाम दिया गया था ऑपरेशन गंगोत्री, एंड इसी वजह से उस रिसर्च सेंटर का नाम पड़ा दक्षिण गंगोत्री। यहां पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नाउ consider the following statement regarding World Food Program. It was initially launched as experiment to provide food aid through the United Nations system. Its operations are funded by entirely World Bank and UNDP. Tell me, कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ठीक है, कौन सा कथन इसमें से ठीक है? वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन टू, neither वन नॉट टू। देखिए, if we talk about, yes, this was launched as an experiment in 1961, and later on we can say कि इंडिया जैसी और बाकी और बहुत सी कंट्रीज में, जैसे सूडान वगैरह एंड ऑल, इनमें ये जीरो हंगर को अचीव करना चाहते हैं। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इसका गोल 2 है नो हंगर, तो उसको अचीव करने के लिए वो कर रहे हैं। 1961 में एज एन एक्सपेरिमेंट इसे लॉन्च किया गया था। यस, वी कैन से मेजॉरिटी ऑफ फंडिंग आते हैं वर्ल्ड बैंक और यूएनडीपी की तरफ से आती, बट कुछ वॉलंटरी डोनेशंस भी आती हैं। So hence, the second statement becomes incorrect. The first statement is correct. The answer will be option A, one only. Now try to answer this. Which one of the following does not have piezoelectric property? अभी इसमें नोबेल पुरस्कार मिला था। अब आपको ये पता होना चाहिए पीजोइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती क्या है। फिर आपको पता होगा कि क्या वो क्वार्ट्ज में होती है, टोपाज में होती है, बेरियम टाइटनेट में होती है, मैग्नीशियम सल्फेट में होती है। ट्राई कीजिए इस तरह का क्वेश्चन, और इवन आपको पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में डायरेक्टली पूछा जा सकता है यूपीएससी। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको इस तरह से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। मान लीजिए ये एक बॉटल है मेरे पास। अब मैं अगर इस बॉटल को कंप्रेस करूं तो इसमें चार्ज डेवलप हो, इसमें करंट डेवलप हो, दैट इज पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कि भी आप किस मटेरियल को अगर ऐसे कंप्रेस करते हैं, उसमें मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इनमें से किसके अंदर वो इंपैक्ट देखने को मिलता है? क्या क्वार्ट्ज में, टोपाज में, या बेरियम टाइटनेट्स में देखने को मिलता है, या मैग्नीशियम सल्फेट? इसमें नहीं देखने को मिलता है। दैट इज द करेक्ट आंसर इज, चलो एक ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन 1 एंड 3 एलिमिनेट कर देते हैं। अब ट्राई करके देखो।
1 and 3 एलिमिनेट कर दिया। अब जरा ट्राई करके देखो। Yes, the correct answer is magnesium sulfate. The correct answer is option D, that is magnesium sulfate. Try to attempt this question. Question number 20. Recently, zero draft negotiations were in news. It is related to which of the following? आपको पता होना चाहिए, यूएन की डिस्कशन चल रही है। अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी, अचीव जीरो मीथेन एमिशन, एंड प्लास्टिक पोल्यूशन, एंड डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल। देखो, इसके बारे में वी हैव डिस्कस्ड कि भाई वी आर प्रपोजिंग अ ड्राफ्ट कि भाई हम एक तरह से किसी चीज को किसी, चलो मैं पूरा क्वेश्चन तो नहीं बताऊंगा, एक बार आप अटेम्प्ट कर लो। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें सी क्या सही आपका ऑप्शन रहेगा? चलो, दो ऑप्शन मैं आपके लिए एलिमिनेट कर देता हूं। 50-50 लगा दिए, ये दोनों ऑप्शन नहीं है। चलो अब अटेम्प्ट करके देखो। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 20। देखो, वर्ल्ड में प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करने के लिए जीरो ड्राफ्ट लेके आ रहे हैं, जो कि आगे आने वाले समय में मरीन पोल्यूशन को भी कम करने के ऊपर वर्क करेगा। एंड इफ वी टॉक अबाउट इन दिस पर्टिकुलर केस, हमने कोशिश ये की यूएन की सभी जो कंट्रीज हैं उनको साथ में लेके चले। तो यहां पर एंड प्लास्टिक पोल्यूशन, ये इसका करेक्ट आंसर। अटेम्प्ट दिस। Lactodon turmeric, recently seen in news, is majorly grown in which of the following state? Mizoram, Meghalaya, Manipur, and Arunachal Pradesh. Question number 21. अब ये तो एटलीस्ट ठीक कर दो यार। यस, करेक्ट आंसर, आप सभी ने सही जवाब दिए। Try this. Which of the following statement is incorrect about X-ray polarimetry satellite by ISRO? Earth is a space observatory to study polarization of cosmic X-ray. First X-ray polarimetry satellite was launched ISRO in 2015. It can make observation from lower Earth orbit. It focuses predominantly on imaging, time domain study, and spectroscopy. इनकरेक्ट कहा है, आपको बताना है। आयुष, आज सुबह वाली क्लास में आप नहीं थे ना? ना सुमोना थी। This is the last question of the day. Question number 22. C, yes, अगर बात की जाए तो C सही है। आप एक चीज बताइए, शायद we have studied this thing एक्सपोसैट के बारे में हमने रिसेंटली बात की थी कि भी PSLV से we are launching। तो भैया ये अभी लॉन्च किया, 2015 में कहां से बात आ गई? तो करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन बी। थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं ना, क्वेश्चंस को बाद में फिर से प्रैक्टिस करना, हफ्ते 10 दिन बाद रिवाइज करने उन क्वेश्चंस को, तो स्पेस नहीं देना है, विवेक शर्मा सर _ टेक्स्ट बुक, स्पेस नहीं देना कहीं भी। देयर इज नो स्पेस इन बिटवीन।
आप इसे टेलीग्राम पे ढूंढ लेना। ये चैनल जहां पर मैं पीडीएफ अपलोड करता हूं, चाहे मॉर्निंग 7:30 वाली क्लास की हो, चाहे आपकी ये वीकली वाली क्लास हो, कोई भी मेरी क्लास हो। तो इसे ज्वाइन कर लेना, और यहां पर मेरी क्लासेस जो भी चल रही होती है उनके लिंक भी आते हैं। तो आज के इतना ही है, कोई बात नहीं सुमोना, कोशिश करो क्लास लाइव अटेंड करो। अच्छा कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में अगले हफ्ते। धन्यवाद। नहीं सेम ही है, मेरा पहले भी यही टेलीग्राम चैनल था, विवेक शर्मा सर _ टेक्स्ट बुक। बट बात यह कि कई बार बच्चे को पता नहीं होता है, तो दैट्स व्हाई आई थॉट कि मैं बता दूं पहले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले हफ्ते। धन्यवाद।